Assalamu alaikum, dear students. As you know, I have started the series of solution of past papers P1, P3 initially. Then after that, I'm going to start mechanics or stats as well. So this is the solution of the latest paper 32 P3 2026. So first question is find the quotient and remainder when 4x cube minus 4x square plus 7x plus 2 is divided by 2x minus 1. So we'll put the higher degree polynomial into the hut like this, and divisor is 2x minus 1. Outside the hut 2x minus 1, or through long division we will solve it. So 4x cube minus 4x square minus 7x plus 2. So first of all we will multiply divisor with 2x square. We will be getting 4x cube minus 2x square. तो ये हमारे पास ये से कट जाएगा. So you will be getting minus 2x square plus 7x plus 2. Then we will multiply divisor with minus x. We will be getting this 2x square plus x. So you will be cutting this minus 2x square with plus 2x square after changing the sign of this term. So then you will be getting 6x plus 2, or then we will multiply 3 with this. You will be getting 6x minus 3, और फिर हम इसको इससे काट देंगे. You will be getting remainder 5. So therefore quotient is 2x square minus x plus 3, or remainder is 5. So if you want to rewrite it like quotient plus remainder over divisor, so you can write. Otherwise you simply mention the quotient and remainder according to the question. So this was the question number 1. Question number 2, 4 marks. Solve the equation 2 raised to power x 5 minus 2x is equals to 4 raised to power x plus 1 over 3, giving your answer in the form of this, where a and b are the integers, or this question is related to the logarithms. So we will apply simply the log both sides. When we will apply the log both sides, so you will be getting 5 minus 2x into ln 2 x plus 1 ln 4 minus ln 3. Will make the x as the subject of the formula. Will bring the terms involving x on the same side and the constants on the other sides. Take x as a common. You will be dividing this by this, so you will make x the subject of the formula to ln of 24 over 2 ln x, or x is equals to what? Ln of 24 over ln of 16. This is question number 2 of 4 marks. Very easy question. Question number 3, that is related to what? Complex numbers. The complex number s and t are given by s is equals to what? 3 times cos of 2 plus iota sine of 2, and t is equals to what? 2 e raised to power minus iota. Express st in the form of r e raised to power iota theta, where theta is greater than minus pi or lesser than or equals to what? Pi. R is positive. So we will be getting the modulus or argument like this. S is equals to what? 3 cos of 2 plus iota sine 2. So R1 is what? 3, or argument of the is what? 2. So from t 2 e raised to power iota minus e raised to power minus iota, argument of z is what? 2, or modulus of the theta 2, we can say that is minus 1. So when you will be getting st, so that is what? r1 r2 e raised to power iota theta 1 plus theta 2. So you will be getting 3 to the 6 e raised to power 2 minus 1 is 1. So this is what st
this is the part 1. Part B is in an organ diagram with origin O. The point A and B are representing the complex number. S means S is what OA, that is what 3 e raised to power 2 iota, or ST is 6 e raised to power iota. What is the geometrical interpretation about this B part? So when you will be getting ST, this is what the stretch along y-axis with stretch factor 2. And in B, what happens to the argument of T, argument of S? So argument of S is 2, whereas argument of ST is iota. That means the angle has been reduced from 2 radians to 1 radian. So this is just the geometrical effect you have to tell. Okay, the question number 4 also related to what complex number. The question is very simple. The square root of 3 minus 6 under root 2 iota can be expressed in the form of x plus iota y, where x and y are real and exact. Make sure you have to find out the real and exact form of x or y. By first forming a quadratic equation, find the square roots of this complex number 3 minus 6 under root 2 iota, giving your answer in exact form. Or you have to give the form in Cartesian form. ठीक? So then put 3 minus 6 under root 2 iota inside the hut, means you have to put the square root, or that will equals to what? A plus iota b, because every real number, when we take the square root of every real number, you will be getting the 2 real numbers. Same like that, when you are going to take the square root of any complex number, you will be getting the 2 complex roots. So we will proceed with the question. First we take the square on both sides. You will be getting 3 minus 6 under root 2 iota is equals to what? A square minus b square plus 2ab iota. Then comparing the real part with real part, or imaginary part with imaginary part on both sides. A square minus b square is equals to 3 or 6 under root 2 iota, and that is what? Minus this minus 6 under root 2 is equals to what? 2ab. So you will be getting a or b in terms of a, or put solving these two equations simultaneously, you will be getting a quadratic equation, that is what? A4 minus 3a square minus 18. Then put a square is equals to what? This is the disguised quadratic equation. You have to solve by substituting another variable. A square is equals to what? X. So when you will be putting the x over here, so that becomes x square. You will be getting a proper quadratic equation. Then solve the quadratic equation, or you will be getting the two values. X is equals to 6, x is equals to what? Minus 3. You will be ignoring x is equals to minus 3, because a or b, x or y are the real numbers itself. So you will be getting a is equals to what? Plus minus under root 6. So you will be getting a is equals to under root 6, or a is equals to what? Minus under root 6. By putting these values of a over here, you will be getting the value, corresponding value of b, or you will be getting two corresponding values of b, this or this, or so you will be getting two complex numbers, 6 minus under root 3 iota, or minus 6 plus under root 3 iota. So these were the two questions simultaneously from the complex numbers. Okay. Question number 5. This is the calculus differentiation, or you have to solve. You have to find out dy by dx. तो कहता है parametric equation are this and this. For 0 to pi by 4, find an expression for dy by dx in terms of tan to theta. Is it okay? These are the parametric equations. So you will be getting dx by d theta over here.
dy by d theta over here, or then you will combine dy by dx, or you will be getting the relationship, or you will take 2 as common from the denominator, or you will be getting 1 minus secant square 2 theta. So we have 1 minus secant square 2 theta हमारे पास तो नहीं है, but we have secant square theta minus 1. So you will be putting minus with this, so you will be getting dy by dx is equals to what? 2 tan theta minus 3 over tan square theta. I just have changed the arrangement, minus common लेकर के इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, तो after that the next part is find the exact coordinate of the point on the curve at which the gradient of the tangent to the curve is minus 1. So put this is equals to what? Minus 1. You will be getting a quadratic in terms of tan theta. Then you will be using the substitution with tan 2 theta is equals to a. You will be getting a quadratic, or you will be getting the two values, a is equals to this, or a is equals to what? Minus 3. So tan 2 theta is equals to what? 1, or tan theta is ranging from 0 to pi by 4, but we have 2 theta. You have to make the rearrangement of its domain. 2 theta is equals to what? 0 to pi by 2. So tan 2 theta is equals to what? Tan inverse 1, that is equals to what? Pi by 4, or you will be getting pi by 8, Is it okay? Or if we use this one, so you will be getting the value of theta out of the range, that is what? 0 to pi by 4. So you will be not taking this value. So this is the value of theta. We will be using this theta in the original equation x or y to find out the coordinates of the point. So put theta is equals to what? Pi by 4 in the x, and then y you will be getting the corresponding values of x or y. So these are the answers for the coordinates of the point. Question number 6, again related to the first part, is related to the differentiation, or this is what this is the product of the two functions. You can use u into v. So we will be using the same u into v, u v dash plus v u dash. You will be getting and simplifying the values when x is equals to what? 1 over 3. 1 over 3, by putting 1 over 3 you will be getting 1 by 2 plus pi by 4. या हम इसको 2 plus pi plus 4 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Is it okay? Then this was the differentiation question of 4 marks, or question number same B part 6 marks. Different integration 0 to pi by 3 y dx. Find the exact value. Exact value means you don't have to use the calculator basically. Yeah. If you use the calculator, you have to give the answer in terms of pi or in terms of square root. Sorry. So as you know, how you will be selecting the selecting the first function from the given two product of the two functions. So hierarchies ki, I have already told you that tan inverse is always the first function. If tan inverse is not involved, then logarithmic function will be the first function. अगर ये दोनों नहीं हो तो algebraic function will be the first function. अगर तीनों ना हो तो फिर आपकी मर्जी है, up to you, जिसको मर्जी first और second रख दें. तो since we have tan inverse over here, तो this is the first function और x will be the second function. तो first function remain the same, integration of second, x square over 2. Copy और paste, simple. वेरी सिंपल, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. कॉपी और पेस्ट, ये जो आया है इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है. और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स 3x1 over 3x का स्क्वायर बेसिकली, और 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3. तो आई हैव रिटन 9x स्क्वायर डायरेक्टली और 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3 लिख दिया. तो कॉन्स्टेंट्स जो हैं हम उनको पहले बाहर लिख लें, सिंप्लीफाई करके इनको ज़रा रीअरेंज करके लिख लें, और ये हमारे पास जो है वो एक बच जाएगा x स्क्वायर ओवर 9x स्क्वायर प्लस
1. So this is basically improper fraction. You have to then make the long division for its simplification. तो जब आप इसकी लॉन्ग डिवीजन करोगे तो हमारे पास बचेगा क्वोशिएंट 1/9 और रिमाइंडर -1/9. तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर 1/9 -1/9 into divisor is 1 plus 1/1 plus 3x square. तो दिस इज़ व्हाट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ x स्क्वायर ओवर 9x स्क्वायर प्लस 1. हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ द वेरी सिंपल वे. तो देन अगेन वी विल इंटीग्रेट these टूस. अगेन 1/9 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/9x, और 1/9 को बाहर लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3x अगेन. Then we will apply the limits -1/3 to 0, upper limit minus lower limit पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन डिफरेंशिएशन. दीज आर द 3 consecutive questions from the differentiation and integration. तो मैनी स्टूडेंट्स टोल्ड मी अबाउट सारा सर पेपर तो था ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का था, तो लग भी रहा है लाइक दिस, बट एवरी टॉपिक एग्जामिनर हैज़ टू कवर. तो सो द कर्व is this, the gradient of the curve is equals to this, where x is equals to a. 4 marks का पार्ट है. show that the alpha satisfies this equation. तो ये u over v है, तो हम इस पर u over v का फार्मूला लगाएंगे. तो v स्क्वायर v एज इट इज़ u डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v डेरिवेटिव. ये हमने किया और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी लाइक दिस. ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास यही उसने कहा है जी आप इसको शो करें, तो ये हमने इसको शो कर दिया. फिर अगले पार्ट में वो कहता है सॉल्व करें. तो ये सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम एस में कर रहे थे. तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम इसको ए कह देते हैं. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, हमारे पास उसकी एक वैल्यू आ जाएगी बेसिक. हम इसको यूज़ करते हुए उसके जो है ना वो एंगल्स निकालेंगे. एक्स की ओरिजिनली रेंज 0 to π है, हम उसकी रेंज को रीएडजस्ट करेंगे. हमारे पास 0 से लेकर के 3 π तक उसकी रेंज बन जाएगी. ये आपका बेसिक एंगल है. इससे हम क्वाड्रेंट सिचुएशन बनाएंगे. तो बेसिक एंगल में ये पॉजिटिव है साइन, तो ये भी साइन पॉजिटिव है. तो एक आपका एंगल ये हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट 3x. सबको फिर 3 से एंड पे डिवाइड करना. एक आपके पास 3x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा π माइनस दिस. फिर हम जब घूम कर आएंगे तो ये हमारे पास जो है वो 2 π हो जाएगा. फिर आ जाएगा हमारे पास 2 π प्लस 0.4826 और 3x, और 3 को फिर एंड पे डिवाइड करेंगे. और ये हमारे पास यहाँ तक 3 π है, तो हम ये ले लेंगे हमारे पास 3 π माइनस 0.4826 डिवाइडेड बाई 3. तो ये आप इसके आंसर्स जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक, तो ये इसके आंसर्स डिवाइडेड बाई 3 करके लिख लेंगे इसको सॉल्व करके. इज इट ओके? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 8 is related to the numerical solution of equation. This is a very easy question. You have to just draw the graph of the two equations like this is what trigonometric function y is equals to what cosecant x और y is equals to what 1/2x plus 3/2. This is the linear equation, straight line बनेगी और ये इसकी cosecant x का ग्राफ बनेगा. ये हमारे पास cosecant x का ग्राफ है, ये straight line है. तो if two graphs intersect each other within the given range, then you can say that the root lies between these 2 points. So yes, these two graphs intersect, so हमारे पास root इसका exist करेगा. ठीक. सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि शो बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाइज बिटवीन 1 और 1.2. तो यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन बेसिकली इक्वल्स टू 0 करके इसको आप एफ ऑफ एक्स कर दें, मतलब एक साइड पर आप इसको लेकर चले जाएं. देन यू कोसिकेंट 1/2x माइनस 1/2x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1. तो यू विल बी गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू एफ ऑफ 1.2. when you will be putting, you will be getting the negative value, means the sign has been changed. So it is proved that the roots lies between these 2 points. Then part C is what you have
to make कहता है show that if the sequence of the real values given by the iteration, so then it will converges in part 1. So you have to remove the n's. You simply will be getting this equation, then make 2 को डिवाइड करें, साइन इनवर्स उधर जाकर साइन हो जाएगा, और दिस इज व्हाट 1 ओवर साइन of 1 by 2x is equals to this, so 1 by sin 2x is what cosecant of 1 by 2x. डी पार्ट में फिर वो आइट्रेशन का कहता है, हम उसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं 1 और 1.2 की मिड वैल्यू इज 1.2 बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1.1 ओवर हियर इन प्लेस ऑफ x. तो इसकी हम आइट्रेशन करते जाते हैं, और जब लास्ट 3 टर्म्स जो है वो उसकी 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ जो है वो मैच करना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि यस रूट ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. और उसने कहा कि जी आप उसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखो, तो 1.037 इज़ द रूट ऑफ द equation. So this was the question related to what numerical solution of equations. Question number 10 is what related to the vectors. It is not very difficult question, but of 10 marks, you know, or part A is what कहता है the 2 points A and B have position vectors 4, 3, 4, 1 or 4, 3, 1. The line M passes through the points A or B. Yes, find the vector equation of the line M. तो हमें पहले इसकी डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करनी है. OB माइनस OA करके हम इसका जो है वो डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेते हैं. यस, ये हमने निकाल लिया उसका डायरेक्शन वेक्टर, और यूजिंग वन ऑफ द पॉइंट इधर दिस और दिस, तो यू विल मेक द इक्वेशन ऑफ द लाइन M. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, very easy. Question number same B part, determine whether the lines LM are parallel, intersecting or skew lines. To make the Cartesian equation, parametric equation of both the lines L और M. ये L की parametric equation है, ये M की parametric equation है. Make x is equals to x, 3 equations बनाएंगे. हम दो को simultaneously solve करेंगे और उनसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल करके थर्ड में पुट करेंगे. इफ़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग है. तो ये हमने पहले म्यू की वैल्यू निकाली, फिर इसको हम इक्वेशन 2 में पुट किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली. ये दोनों म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ जो है वो हमने इसमें पुट की 1 में. तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब 6 इक्वल्स टू 6 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, तो देयरफॉर द लाइंस आर नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग मीन्स स्क्यू लाइंस. ओके. सी पार्ट इज अगेन 4 marks, very easy question. The point P lies on L and is such that PAB is 60 degree. Find the position vector of P. तो हम P को कोई position vector L के ऊपर जो है वो assume करके x, y, z कह देते हैं. ये हमारे पास A है, ये B है, ये दो वेक्टर्स एक AB हो गया, एक AP हो गया. ठीक, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर और इसका डायरेक्शन वेक्टर हम जो है वो OP का एक पोजीशन वेक्टर जो है वो हम बना लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ वट OP हमारे पास आ जाएगा. जनरलाइज हम इसको करेंगे ना, तो ये हमारे पास 6 प्लस म्यू माइनस 1 माइनस म्यू, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया. फिर हम AP पॉइंट जो है वो निकाल लेते हैं. यस, दिस इज़ व्हाट AP, हम इसको B कह देंगे. और यहाँ से इसका जो M का डायरेक्शन वेक्टर है उसको हम वेक्टर A कह देते हैं. इन दो के दरमियान में एंगल 60 डिग्री का है. हम इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, सिंप्लीफाई इसको करेंगे. ऑफ कोर्स दैट इज़ क्वाइट लेंथी प्रोसीजर. ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी. ये इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है वो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन वी विल बी यूजिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट -3. तो यू विल बी गेटिंग 3 2 और व्हाट -3. So this was the question related to the vector, or the question number 10. I guess this is the last question, or this is what partial fraction or differential equations का. तो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी. हम कहते हैं एक्सप्रेस दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. तो हमने ये फर्स्ट पार्ट इसको जो है वो, चूँकि ये लीनियर डिनोमिनेटर है, नॉन रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर है, तो a ओवर x माइनस 1 b ओवर 2x माइनस 6. फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी. तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. फिर इसी को उसने कनेक्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ. व्हेन वी हैव सेपरेटेड द वेरिएबल
वेरिएबल्स और वी हैव ln2y dy, और ये हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी जो ये हमने ऊपर जो है वो सॉल्व किया है लाइक दिस। तो मतलब हम इसकी ये वाली फॉर्म जो है वो इसको यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -ln(x-3), और इसकी इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, मतलब ये 3/2 हो जाएगा ln(2x-6). और ये लॉग है हमारे पास, लॉग का इटसेल्फ कोई फार्मूला नहीं होता, बट हम इस पर बाय पार्ट्स लगा देते हैं, 1 को एज अ सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और ln जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, कॉपी और पेस्ट हो गया, और इसका डेरिवेटिव 1/2y और 2y का फर्दर डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन दोबारा जो है वो y हो जाएगी। ये हम इसको डिफरेंशिएट कर चुके, इंटीग्रेट कर चुके हैं। उसके मैंने x=1 y=1, तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ln c की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पर c भी लगा सकते हैं, ln c भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, वो एक ही बात होगी। मैंने ln c लगाया, मैंने ऑफकोर्स आप लोगों में से बहुत सुना c लगाया होगा। तो जब आप c की वैल्यू पुट करोगे तो तब भी वही वैल्यू आ जाएगी। मैं सारे ln c की जगह पर जो है वो ये ln c की जगह पर हम जो है वो ये सारी वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे, तो यू विल बी गेटिंग दिस फाइनल आंसर। इसको उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि x और y की फॉर्म में ये आपने इसको सॉल्व करना है। होपफुली आपको जो है वो ये वीडियो जो है अपना जो आपने पेपर सॉल्व किया है उसको एनालाइज करने में हेल्प करेगी। आप अपने मार्क्स जो है वो काउंट कर सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इफ़ यू फाइंड एनी kind of problem, you know, after exam even, so you can contact me. Thank you very much.